All right. Hello, everyone. Welcome. So today we continue with our review, not a review or a preview of IPL teams for the upcoming season IPL 2024 जो कि जल्द शुरू होने वाला है. तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी लखनवी टीम की लखनऊ सुपर जायंट्स और वी वांट टू सी कि इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, सजेस्टेड 11, क्या हो रहा है टीम में, स्क्वाड में क्या हुआ है, व्हाट आर वेयर दे स्टैंड राइट नाउ. So without further ado, let me bring in um, our co-presenters and co-discussion hosts and all those things. We have Saurabh, जिन्होंने proudly लिखा है KKR fan. Yes. हमारे पास साथ अमन भी हैं जो कि अपने आप को डाई हार्ड क्रिकेट फैन कहते हैं, एंड देन वासु जो कि भाई ग्राउंड लेवल पे जाके रणजी तक के सारे रिकॉर्ड्स पढ़ के आ जाते हैं. So there it is. So we will start with जो लखनऊ के सबसे नज़दीक है अभी. सो करेंटली डिस्टेंस वाइज आई थिंक ये थोड़ा सा डिस्कशन में हो सकता है लड़ाइयाँ हो जाए. अमन और सौरभ मेरे ख्याल से सिमिलर डिस्टेंस पे हैं, बट देन विल से कि दिल्ली पास है, तो विल गो विथ सौरभ. सौरभ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स हैपनिंग? As soon as I think about Lucknow Super Giants, मुझे गलोटी कबाब याद आ जाते हैं वहाँ के. So coming coming to the team and the captain, it's a, I would say it's a good franchise. Plus in the last 2 season जब से वो लोग आए हैं, वो लोग क्वालिफाई करे हैं, टॉप 4 में रहे हैं वो लोग, एलिम जाते हैं. इस बार भी मुझे लगता है स्टोरी सिमिलर होने वाली है. दे हैव अ गुड स्क्वाड. प्लस जो उन्होंने एड ऑन्स करे हैं उसमें एक दो अच्छे एड ऑन्स हुए हैं जिसने स्ट्रेंथन करा है टीम को. Apart from that, I don't see any challenge in Lucknow's team. Just one good thing that happened is जो ये पूरा स्क्वाड है उसमें जस्टिन लैंगर ऐड हो गए हैं अब एज कोच फॉर लखनऊ. इंस्टेड ऑफ आई गेस गौतम गंभीर चले गए हैं और जस्टिन लैंगर आ गए हैं. तो ये हुआ है. ओके, अमन, सो विल कम टू यू. सो लखनऊ, मैं अगर लखनऊ याद करता हूँ आईपीएल के लिए, तो मुझे सबसे पहले तो वो मैच याद आता है जहाँ बहुत ही गहमा गहमी हो गई थी. अभी अब इस सीजन कैसा रहेगा, वो लखनऊ आरसीबी में देखने को मिलेगा या केकेआर और आरसीबी में देखने मिलेगा, क्योंकि गौतम गंभीर हैज मूव्ड, जैसा भी सौरभ ने बोला. जस्टिन लैंगर के आने से मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, बट आई थिंक द कॉम्बिनेशंस वो थोड़े से चेंज हो सकते हैं. वो डिपेंड करता है व्हाट व्हाट कैप्टन इज सेइंग और ऑन व्हाट कोच इज सेइंग. एक जो मैंने न्यूज कहीं पढ़ी थी वो ये था कि केएल राहुल वांटेड टू प्ले इन मिडिल ऑर्डर. मे बी हिज फोकस इज T20 वर्ल्ड कप व्हिच इज जस्ट आफ्टर आईपीएल. और टॉप ऑर्डर इंडियन टीम का T20 में इज टोटली पैक्ड. सो आई थिंक केएल राहुल को वो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर, एंड व्हेन आई से मिडिल ऑर्डर वो भी थोड़ा लोअर मिडिल ऑर्डर कह सकते हैं. सो उसके अलावा आई डोंट सी एनी बिग चेंजेस. एक ट्रेड विंडो में एक चेंज जरूर हुआ था लखनऊ के साथ, जहां पे दे गॉट देवदत्त पडिक्कल इन, एंड आवेश खान को उन्होंने ट्रेड कर दिया था राजस्थान रॉयल के साथ. अनफॉर्चुनेट, बट ठीक है, सह लेंगे हम थोड़ा. सो देवदत्त पडिक्कल, सो टॉप ऑर्डर मेरे ख्याल से स्ट्रांग हुआ है, और यही शायद प्लानिंग रही होगी कि राहुल मिडिल ऑर्डर खेलेंगे तो हमारे पास टॉप ऑर्डर में एक अच्छा प्लेयर होना चाहिए. बट अभी करंट अगर मैं टीम देखूं उनकी और बैटिंग लाइनअप की बात करूं, लखनऊ ने निकोलस पूरन को वाइस कैप्टन भी बना दिया है. एंड पहले निकोलस पूरन आईपीएल में उतना अच्छा करे नहीं है, लोअर ऑर्डर भी खेले हैं, बट अभी रिसेंटली वो वेस्ट इंडीज टीम हो या वो पीएसएल हो या वो इंटरनेशनल T20 हो, या जहां भी वो T20 खेले हैं, वो 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं. सो आई सी निकोलस पूरन प्लेइंग एट नंबर 3 अगेन. सो फिर टॉप So, ऑर्डर Aman, में लेफ्टी बहुत before ज्यादा we हो जाएंगे. continue, what I'll do is I'll share the squad for this year. हम्म. Um, so yeah, so
This is the squad. So, Aman and Vasu, take it away. Walk us through what's happening here. Nicholas Puran ka you were continuing and you're explaining. सो मेरे ख्याल से एक स्क्वाड सुपर फ्लॉप है ये. ऑलमोस्ट सेम सा है, बहुत ज्यादा चेंजेस स्क्वाड में नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली मेगा ऑक्शन नहीं था, तो कुछ प्लेयर रिटेन हुए, कुछ प्लेयर चले गए, दे गॉट सम न्यू प्लेयर्स एज वेल, बट मेजर जो कोर एलएसजी का मुझे दिख रहा है वो सेम ही है, सेम कोर पिछली बार भी खेला था, इस बार भी वैसा ही है. मार्कवुड आई थिंक ही इज नॉट अवेलेबल बिकॉज रीजन जो अभी तक पता चला है वो यही है कि वर्कलोड की वजह से he pulled himself out of IPL, and Shamar Joseph is his replacement. तो So वो तो अभी उसके ऑफिशियल नहीं है अलावा ना. यही एक मेरे को लग रहा है कि this is the only change, जिस जो फोकस चेंज मैं बोलूंगा. बाकी शिवम मावी इज अनदर एडिशन. सो मेनली इट्स द बॉलिंग. बैटिंग में आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट सेम. कृणाल पांड्या भी थे, दीपक हुडा भी थे, काइल मायर्स भी थे, माइकल स्टोनस भी थे. So this is like one or two small changes. Rest, LSG will going with the same approach. Maybe the result they got in previous two editions, they again get some similar results, or maybe one step ahead and going to the finals. Let's see. But दूसरे squads भी काफी strong हैं, so I would say LSG कहीं ना कहीं close to playoffs वहां पे उतना रह पाएगी. वासु, what's your I call? would I I would second that, and this is what I feel as well कि हालांकि स्क्वाड में कुछ खास चेंजेस हैं नहीं, इनका कोर वही का वही है जो लास्ट ईयर था. Yes, there is a change in the coaching staff, of course, with Langer coming in. There can be an international experience, but somehow मुझे ऐसा लगता है कि bowling department में somehow LSG is lacking a bit. Home games शायद वो फिर भी black soil wicket को लेके they'll be able to do better with the kind of spinners that they have. But overall, अगर मैं देखूं, Mark Wood is not there, and Mhm. they have David Willey as a replacement. But still, I feel कि somewhere they're good in their batting department for sure. But when it comes to bowling department, they are definitely lacking the sting. Krunal and Deepak, they're good all rounders. Krunal can be said to be a decent bowler as well, but he is not a wicket taking bowler. So they will be heavily relying on the skills of Ravi Bishnoi. And if in case Shama Joseph is playing, then of course they would want him to go all out and out for them to uh, succeed in this. I feel somehow, my personal opinion, that they may not be able to make it to the playoffs this time. But it's a game of cricket, we never know. So let's see. नहीं, आई थिंक जो आप पॉइंट बोल रहे हैं कि बॉलिंग इज नॉट दैट स्ट्रांग, मुझे नहीं लगता कि वो फैक्टर है, कंसिडरिंग मोहसिन खान, यश ठाकुर का जो लास्ट सीजन रहा, देन रवि बिश्नोई इज देयर, नवीन उलक, अभी इन्होंने पेस के लिए दे हैव एडेड शिवम मावी टू. सो आई गेस बॉलिंग में आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी अ ट्रबल एट ऑल. यू नो, विद दीपक हुड्डा एंड कृणाल, वो अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों मिलके 4 ओवर. और मुझे लगता है एक बहुत ही डिसेंट टीम है इनकी. आई डोंट थिंक कि इनको ट्रबल होगा टॉप 4 में जाने के लिए, क्योंकि ये So सेटल्ड स्क्वाड है, इसमें ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है, बस अच्छे एडिशन हुए, जैसे शिवम मावी का पेस आ गया इनके पास, प्लस डेविड विली एज अ बैकअप ऑप्शन थे ही मार्कवुड का, तो वो भी शायद खेले, पर जहां तक है नवीन उलक वुड प्ले. So, बट इस hang बार on. थोड़ी So, सी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज होगी सौरभ, बिकॉज पहले केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक 2 सीजन से ओपन करते आ रहे हैं. मोस्ट प्रोबेबली क्विंटन डिकॉक विल हैव अ न्यू बैटिंग पार्टनर, हाँ, तो मे है ना बी उनके पास, देवदत्त पडिक्कल इज पडिक्कल. देयर राइट. सो पडिक्कल ने So आरसीबी में open किया है. that approach, so and being Devdutt Padikkal being left-handed, Quinton de Kock and Nicholas Puran, they are quite vulnerable against off spin, and we have seen in IPL spinner attack starting में एक बार हो जाता है तो थोड़ा सा वो है कि आप बहुत ज्यादा exposed हैं.
because And that is top three and are just that is left-handers for where you. that is where I feel that maybe they will not go with a particle decode combination at the top, and they may want to repeat what they did last year when they started the campaign. They opened with Kyle Myers and Kyle Myers is also a left-handed batsman. yeah, for that matter, yes, you're correct. I Too was many going, left-handed batsmen. yeah. So yeah, that वो तो है जो आप कह रहे हो अमन. नहीं, so Sunil, do एक you think क्वेश्चन है मेरा इसमें. See, batsman batting I think is more or less sorted. इनके पास they have good spin attack, I think, pretty decent. um, and you touched on this fast bowlers. कौन है इनके पास फॉर? You spoke about David Wiley and you also spoke about Mavi जो KKR में कभी ठीक से नहीं चला. David Wiley, I don't know how consistent he is. So isn't that their Achilles heel? How can we think that they'll be some team which could be aiming for top four? I mean, of course they'll be aiming for top four. so Mohsin Khan is a good addition that they already have, right? He's a good bowler. But He's a good fast. Saurabh Mohsin Khan did fantastic for them in previous season, but then Mm. he met with an injury, which was quite big injury, and since then, how he is performing in domestic, what kind of comeback he can make to the side, it's questionable, I guess. So इसीलिए तो यश ठाकुर भी है. यश ठाकुर is also a pace bowler. Last season was decent for him. अगर हम See, देखें. Saurabh, so what we are trying to say, matlab, see, you're banking on the young guns of LSG, but the point is all of them are young, pretty inexperienced, and this is where I said that okay, fine, the bowling attack of LSG may be lacking that killer instinct, which they would have liked to have to go to the playoffs. And this is where my comment was. Otherwise, on paper, all of them, see Shivam Mavi, though he has been injured a lot for the whatever seasons he has played for KKR, but whenever he has done decently. Same goes for Yash Thakur. He did well in whatever opportunities that were presented. Mohsin Khan, again, uncapped player. He did very well when he played last season as well. But throwing all the inexperienced people and making a team and then expecting them to deliver, what if, for example, a top order of say CSK or an MI or a GT, which is going to be heavy top orders that I expect. They will put into immediate pressure, is what I feel. Hopefully, Justin Langer, who is a very tactical coach, he can bring in his experience. He can maybe help groom these bowlers. But again, he was a batsman at his time. How can he help I a think bowling Vasu, young bowling unit? this No, Never. no, season, no. He's this a season firstly, he's a LSG World Cup LSG winner may coach, right? Sorry, sorry. He's a World Cup winner coach. he's ऑस्ट्रेलिया a को, या सो definite. ये तो लॉजिक मेरे को नहीं लगता कि सही है कि वो बैट्समैन था तो वो बॉलर्स को उसके नहीं पास नहीं, अपना that's स्टाफ होता है, that's राइट? nothing to do I with respect with that. the है वो बता batsman सकते हैं, ऐसा नहीं mentality है. as a coach. या Yeah, ऐसा तो there's नहीं no होगा. doubt on that. डेफिनेटली अब लाइक ही इज द सीनियर कोच. आपके पास बैट्समैन और लाइक एज अ बॉलर कोच अलग, सब कुछ अलग होता ही है. सो mostly it is about how they're going to approach and play the game. But with the current squad, like we spoke about the squad, it is quite similar. Core आपका वही है. I'm not saying it is not a very good squad. It may work for them with the new strategy and something. They can be in the top 4, but अगर 10 टीम है तो I will keep LSG in top 5 और top 6. उससे नीचे मैं LSG नहीं देखता हूँ कि बॉटम पे रह जाएगी और अच्छा नहीं कर पाएगी. नहीं, वैसा नहीं होगा. LSG it's a good squad, so I would say कि टॉप 4 भी हो सकती है, बट टॉप 5 टॉप 6 भी रह सकती है. हो सकता है क्लोज रह जाए प्लेऑफ्स पे आने से, बट अगेन देयर आर अदर स्क्वाड्स एज वेल. अगर मैं उनसे कंपेयर करूं तो LSG से स्ट्रॉन्ग स्क्वाड्स भी हैं अवेलेबल, जो But जो see, कि the thing वी is, विल डिस्कस इन कमिंग LSG as वीडियोस. the team as a whole is heavily dependent on home conditions, and
and away from home they will struggle. um, I don't know इनके अगर सारे के सारे मैचेस जो होम मैचेस हैं वो एक्चुअली लखनऊ में हो रहे हैं कि नहीं. आई डोंट नो इफ यू गाइस, क्योंकि पूरा भी कैलेंडर अभी आया नहीं है इनका. अभी पूरा स्केड्यूल आया भी नहीं है. हाँ, सो वील फाइंड आउट. अगर पूरे मैचेस होते हैं देन यू नो दे विल बी इन अ गुड, दे प्रोबब्ली वुड बी ऑलराइट. लेकिन अगर बाकी टीम्स की तरह अगर इनके कुछ मैचेस मान लो कभी कोई गुवाहाटी में हो गया या कहीं और मैचेस इनके स्केड्यूल हो गए जो कि लास्ट ईयर भी हुए थे, then they will really struggle. So that's my worry. But yes, you know, overall a good team. I think we should look at the probable 11, and then you know we'll see how the team is going to composition going to look. So I think top of the orders, if we have to start, it has to be Quinton de Kock. Mhm. And I personally feel KL Rahul, just keeping in mind if it's IPL, nothing to do with the coming T20 World Cup. So I think KL Rahul and Quinton de Kock are the best choice of openers for LSG. But if we consider the change, KL Rahul will play in middle. I think Devdutt Padikkal and Quinton de Kock probably open the inning, because we have seen Devdutt Padikkal. He does nothing when he is not, like, he's not opening the innings. Rajasthan Royals man, he is not fit to play for at number 3, number 4. So I think Padikkal and Quinton de Kock would be the openers for LSG. सो हमने आई गेस सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर की बात ही नहीं करी है. इनका मार्की प्लेयर की हमने बात नहीं करी है. आई गेस दैट्स मार्कस टॉयनिस. मुझे लगता है कि वो बहुत ही क्रूशल प्लेयर है इस टीम के लिए. और वो यू नो ओपन भी कर I agree, और हाँ, वो क्रूशल प्रूफ भी हो सकता है. आई थिंक ऐसा एक आधा मैच होगा जहां पे मार्कस स्टोइनिस सिंगल हैंडली वो मैच लखनऊ के लिए ले या जाए. बट सी, इफ यू सी प्रोबेबल 11, आप 4 ही ओवरसीज प्लेयर खिला सकते हो. एंड आई तो थिंक निकोलस मार्कस इज पूरन एंड दैट. क्विंटन डिकॉक, ये 2 जगह तो बुक्ड है. हाँ, तो मार्कस इज 100% इन. आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि एलएसजी मार्कस टॉयनिस को अपने 11 में नहीं लेंगी. आई गेस वो होगा ही होगा. आई वुड स्टिल से मार्कस स्ट्रांग है प्लेइंग 11 में आने के लिए, बट काइल मायर्स जैसा उन्होंने लास्ट सीजन भी किया था, बीच बीच में उन्होंने इन दोनों के साथ ही स्विच मारा था. I would go with Marcus, and I Yes. still remember one match in BBL जहाँ पे Marcus Stoinis ने open किया था and he bashed 150 Right. opening So I run. guess yes. So as per our discussion जो हमने before we were even recording this video, हमने वैसे ही बात करके this is what I came up to. This can be the best probable 11 for LSG, starting with KL Rahul, Quinton, then Nicholas Puran, Devdutt Padikkal, then power hitting of Hooda and Krunal Pandya. For bowlers they have Bishnoi, Mohsin, Navinullah, Shivam Mavi. So ये 4 bowlers हो गए sorted. Okay, and Yep. then 4 overs बाकी हैं, तो वो मार्कस टॉयनिस, हुड्डा और कृणाल I guess would be able to do it. Krunal will play like a I think proper ये bowler. best है. हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है. मतलब वो पूरे 4 ओवर अगर कभी पिटता है तो दे हैव एन बैकअप ऑप्शन टू. वो 2 ओवर Yes, मार्कस टॉयनिस से भी करा सकते हैं. yes. सुनील, व्हाट डू यू In से? this current 11, bowling option 7 है लखनऊ के पास, so I think they can easily manage Yeah, Yeah. plus with इसमें this. ग्राफिक में एक करेक्शन है. नवीन उल हक is the 4th overseas player, so we should consider that when you're looking at the graphics. So I think this is probably the best 11, and then you need to who could इनका impact player कौन हो सकता है? आयुष बदोनी. Impact player इनका अगर बैट्समैन चाहिए तो वो आयुष बदूनी आएगा, just like last season is what I feel. Yeah. And if we are talking about a bowler, maybe Krishnappa Gautam can be an impact player. और अमित अमित मिश्रा. Or Amit Mishra. Yeah, exactly. I was about to come to that. Amit Mishra, they utilized him as an impact player last year, especially at Lucknow, Khanna Stadium में. Amit Mishra का उन्होंने काफी इस्तेमाल किया था. They used to bring him, complete his over, and then move him out in case if they are bowling first.
So I believe that is how they are going to do it. Mhm. So I guess that takes us to the end of the video. Final prediction, I'll say top four for them. Uh, anyone I think has it's any? No? I think it's top 6 Top at best. Yeah, I same will here. also like top Top 6. six. ये सौरभ को थोड़ा सा लखनऊ से प्यार है, तो उसने सोचा Guloti मुझे कि kebab. लखनऊ के टुंडे गलौटी कबाब कबाब से बुला प्यार रहे है। हैं। Tunde that's kebab. it then. Okay, thank you everyone for All right, joining. thank you guys. Thank you. Let's catch up for the next review. Sure. Wonderful. Thank you. Thank you, guys.